Assalamu alaikum dear student. Today we are going to solve the past paper worksheet related to the fractional distillation of the petroleum. Our first question is draw one straight line from our first fraction is fuel for the aeroplanes. The correct answer is kerosene. Fuel for the ships, fuel oil. And serving roads fuels is bitumen. Got it, dear student? Okay. Our second question is the diagram shows the industrial equipment used to separate the crude oil into the fraction. डियर स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच वन फ्रैक्शन कम फर्स्ट एंड विच वन कम आफ्टर। जो इनकी जो तरतीब है ना, स्टूडेंट इस तरतीब के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ए की जगह पे कौन सी फ्रैक्शन आएगा और एफ की जगह पे फ्रैक्शन कौन सी आएगी। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूँ। इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी आप फ्रैक्शन रॉन्ग नहीं लिखेंगे कहीं पे भी। गर्ल प्रेफर नूडल्स, केचप, ड्रिंक्स, फ्राइज, लेमन, बर्गर। हियर डियर स्टूडेंट्स, गर्ल्स जी से स्टार्ट होता है, इससे मीन फर्स्ट फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगी वो गैस होगी। प्रेफर में पी फर्स्ट अल्फ़ाबेट यूज होता है, मीन पेट्रोल। सेकंड में पेट्रोल जिसको हम गैसोलीन बोलते हैं। और नेक्स्ट वन इज नूडल्स, नूडल में फर्स्ट एन है, एन मीन नेफ्था। नेक्स्ट केचप में के मीन केरोसिन। नेक्स्ट में ड्रिंक्स आते हैं, ड्रिंक्स में डी है, डी मीन डीजल। फ्राइज में फर्स्ट कैपिटल एफ है, उसमें फ्यूल ऑयल। लेमन में कैपिटल एल है, मीन लुब्रिकेटिंग ऑयल। लास्ट वन इज बर्गर, बर्गर का बी है और बी मीन ब्यूटेन। डियर स्टूडेंट, इस शॉर्ट ट्रिक को आप माइंड में रखते हुए आप किसी भी तरह का फ्रैक्शन जो मिस होगी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ऊपर उसका आप आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं। इस तरह देखें, ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें जो ए ऑप्शन है और एफ ऑप्शन है, ए का आंसर क्या हमारे पास आएगा? गैस। और लास्ट वन ऑप्शन है एफ, एफ मीन हेयर, ब्यूटेन। आल दो के इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर बहुत सी फ्रैक्शन इसमें मिस है, लेकिन जो गिवन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। डियर स्टूडेंट, our first question is give the name of the industrial equipment. So the fractional distillation of the petroleum जो industrial equipment use होता है that is fractionating column. Question number 2, give one use of the fuel oil fraction. Fuel oil fraction used as a fuel for ship. Question number 3, give the name of the fraction A and fraction B. Fraction A is refinery gas, and fraction F is bitumen. Got it, everyone, dear student? Okay. Or question number 3 is the crude oil is an important source of the organic compound. Diagram shows crude oil being separated into the different fraction. अब डियर स्टूडेंट, अगर जस्ट अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं लेकिन इसमें नेम नहीं दिए हुए हैं, अब अपने इसमें नेम मेंशन करने हैं, एफ ई डी सी बी एन ए, और क्रूड ऑयल एक्स की जगह पे मेंशन करना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नेम द प्रोसेस यूज टू सेपरेट द क्रूड ऑयल इनटू द डिफरेंट फ्रैक्शन। तो द प्रोसेस यूज हो रहा है दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Dear student, fractional distillation is the process in which different fraction of the petroleum separated on the basis of their different boiling point. Next one, state what happened to the crude oil at the furnace heating.
keeping the crude oil at greater than 4 degrees Celsius temperature, and all of the crude oil converted into the vapors, and these vapors enter into the fractionating column for secretion. Our question number 3 is, describe the difference between fraction B and E. In your answer, refer to the size of the molecule, boiling points, color and viscosity. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का आर्टिकल स्टडी किया था डिटेल के अंदर, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है, इसका जो लोअर पार्ट है वो हार्टर रीजन है, जबकि जो अपर पार्ट है दैट इज कूलर रीजन। जो कूलर रीजन है इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। जब मॉलिक्यूल स्मॉल हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी स्मॉल है, उनके कलर लाइट हैं, उनकी विस्कोसिटी कम है, उनकी डेंसिटी भी कम है। जबकि जो हार्टर पार्ट में मॉलिक्यूल हैं उनका लार्ज साइज है। जब उनका लार्ज साइज है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, इनकी विस्कोसिटी भी हाई है और इनकी कलर भी डार्कर है, ठीक है, और इनकी विस्कोसिटी भी हाई है। अब इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए पॉइंट ई और पॉइंट जो बी है इसके दरमियान में हमने कंपेरिजन। So the fraction B and fraction E can be compared in a such way that in case of the B fraction, the size of the molecule large, and in case of the fraction E, the size of the molecule small. Boiling point of the B high, whereas in case of the E, boiling points low. Color lights, darker, dark color. In case of the viscosity, small viscosity and high viscosity. Got it, everyone, dear student? Dear student, our question number 4 is, the diagram shows a fractionating column used to separate the crude oil into the fraction. Here, this is a fractionating column with various fraction of the petroleum. Give a use for the bitumen and use of the gasoline. Use for the bitumen is surfacing the road or roofing, whereas the use of the gasoline is as a fuel for car. Dear student, our next question is, explain why bitumen is collected at the bottom of the fractionating column and gasoline is collected near the top of the fractionating column. Dear student, you knew that bitumen present in the hotter part of the fractionating column, whereas the gasoline present in the cooler part of the fractionating column. So, the bitumen has higher boiling point containing large size hydrocarbon, whereas gasoline has low boiling point with small size of the hydrocarbon molecule. Hopefully, dear student, everyone got well about today's lecture. So please share, subscribe and like my channel. Thank you so much for watching.